अस्सलाम वालेकुम guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. ये ट्यूटोरियल मैंने लगाया था पहले, लेकिन इसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं किया था, तो मैंने सोचा काफ़ी लोगों ने पूछा था कि इसका वॉइस ओवर कर देते, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वॉइस ओवर करके आपको बता देती हूँ. So I originally put this video up a few weeks ago, or a few months, I'm not sure, but I did it without a voiceover, so I thought I'd go through it because a lot of people have asked me to do a voiceover on this one, so I thought I'd do that for you today. So I've started off with my Kat Von D brow gel, and I'm using that to just go through the eyebrows too much. I didn't want them too dark either, so I'm brushing it through quite a bit, and then I'm just adding it lightly. So पहले हमने Kat Von D की जो ब्राउ जेल है वो इस्तेमाल किया है, ऐसा ऐसा आईब्रोज को कर दिया है. आप देख लेंगे कि अभी थोड़ा सा अनइवन लग रहा है, लेकिन मैं एकदम ज़्यादा फिल नहीं करती, क्योंकि जब मैं ये पार्ट करती हूँ कंसीलर का तो फिर उसकी शेप अच्छी आ जाती है, एंड देन थोड़ा बहुत जिधर मुझे करना होता है वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेती हूँ. So I've gone in with my P. Louise base here in Ruma, and now you can see the eyebrows are different at the moment. So because the product is quite it can be quite heavy and harsh. Sometimes what I do is I kind of like get my guideline in and then use my product, the concealer here, to define the eyebrows. And then once I've blended everything out, it shows me whether I need to go darker in any certain places, and then I'll just fill in the eyebrow afterwards a little bit, like you can see I've done it here now. So I'm gone in with a fluffy blending brush and I'm just cleaning out the edges and making sure everything is blended. So यहाँ पे मैंने आईब्रोज थोड़ी सी फिक्स कर लिए हैं, बाद में भी करती रहती हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग करके तो इसको जो प्रोडक्ट था इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया. यहाँ पे अपना फेवरेट पैलेट जैकलिन हिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो एक कलर उठाया है एंड सॉकेट एरियाज पे थोड़ा सा हल्का सा इसको एक फ्लफ़ी ब्रश से टैप करके तो इसको लगाई जा रही हूँ. So I've used the fluffy brush and I'm just using my product and I'm tapping it in onto the outer corners. So it wasn't, it was quite a dramatic look, but more dramatic with the pigment that I'm going to use. So I didn't want it to be too dark on the outer socket areas either. So यहाँ पे प्रोडक्ट वेट है आपका, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता टैप करके इसका कलर ले आती हूँ एंड देन इसकी मैं ब्लेंडिंग करती हूँ. So यहाँ पे अभी थोड़ा सा डार्क कलर लेके जा रही हूँ ब्राउन का ही, एंड आउटर सॉकेट एरिया में इसको लगा दूँगी. अगेन टैप करके इसको लगा रही हूँ एंड देन इसको ब्लेंड करूँगी. So I've gone in with a slightly darker shade now of the brown from the same palette, and I'm just using this on the outer areas, more specifically in the socket area and just below the first colour that I've added. So I tap this on again and then I start blending out. So it's important to go back in with your first shade and just make sure you blend it out. You could see how dark it was initially. Obviously, if that's how dark I wanted to, then I wouldn't blend out what I'm doing now too much, but I just didn't want too much definition. So यहाँ पे पहला कलर लेके तो इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ. जो सॉकेट का कलर है वो थोड़ा सा अभी हल्का हो गया. Obviously अगर आप डार्क रखना चाहते हैं डार्क भी रख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये गोल्ड इस्तेमाल किया है, ये है मैक का, एंड क्रिसमस टाइम पे मुझे ये प्रोडक्ट मिला था. इसको फिंगर से ही लगा रही हूँ एंड बहुत अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड प्रोडक्ट है. So I used this product from MAC. I did get this round about the Christmas time when the products come out. I don't know if it's still available or not, but you can check. And I applied this with my finger. Now you didn't actually need anything else with this product. If you wanted to, you could leave it like this. I mean, the shimmer effect in this was really nice as well. But I did go in with a second shimmer as well, purely because I just felt like doing it, to be honest with you, this time. But it was very nice on its own as well. It's quite a yellowy gold though, so I don't always go for yellowy gold, but it was very pretty. So आप देख सकते हैं कि इसको फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, इसका पिगमेंटेशन लेके आ रही हूँ और साथ ही इसकी ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ. और अब जो सॉकेट एरियाज है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा, ऑब्वियसली इन दोनों कलर्स को मैंने मर्ज करना है, तो इनको यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ. So then I always go back in with my socket area colour and blend it out and bring that colour across a little bit, just so that both colours blend into each other. So now I'm going in with the Kashees Shimmer Fixer, and I'm going to apply this with a brush, and then I'm going to use one of his pigments on top, which I absolutely love. तो यहाँ पे मैंने काशीज़ का शिमर फिक्सर अप्लाई किया है, थोड़ा सा अप्लाई किया, एंड देन ब्रश के ऊपर थोड़ा सा उसका पिगमेंट लेके ना तो वो ऐड कर दूँगी. एंड बहुत ज़्यादा मतलब ये पिगमेंटेड है, ये जो शिमर्स हैं, ये पिगमेंट्स जो हैं ना काशीज़ के, मुझे बहुत पसंद है. सिर्फ थोड़ा सा चाहिए था, हल्के हाथ से बस लगा रही हूँ टैप करके.
ये काशीज़ का आई ग्लोइंग शिमर था शेड नंबर 1 में। एंड इससे बस वो जैसे एक ना अच्छा सा स्पार्कल आ जाता है एंड बहुत बहुत प्यारा है। So you can see I've just used that eye glowing shimmer and it's from Kashees. I know his products, they don't ship to different countries, they only actually do them in Pakistan. So my husband was actually there last time, so he bought me some over. I've actually got some more on order as well now. So I'm sorry if you can't get hold of these products, but the shimmers are really, really nice. So then I make sure I go in and just blend out any harsh edges. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्लेंडिंग आप करते रहें कि हार्श एजेस कोई भी ना रहे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड आईलाइनर लगाया है सिर्फ बेस पे कि फिर मैं आईलैशेस लगा लूँ एंड देन उसके बाद मैं अपना जो अगर उसको विंग देना वगैरह दे देती हूँ। So I've done the eyeliner, I've got the eyelashes with the glue one waiting, so I'm going in with my vitamin C cream. Any vitamin C cream here can do, going in with eye cream, or you can use obviously the products I use as well. तो यहाँ पे मैंने विटामिन सी का सीरम लगाया है एंड देन यहाँ पे आई क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन को आप हाइड्रेट कर दें। जब इतना ज़्यादा मेकअप आपने लगाना है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसका जो फ़र्क है ना वो बाद में नज़र आएगा। ड्राइनेस मतलब आ जाती है, पैचीनेस आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लॉट का जेल आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ आइज़ के अंदर। So just using a little bit of gel eyeliner here. This is from Inglot number 77. So I'm just giving it a little bit of a point, not too much, in between like the products that I'm adding. So it just gives me something to do. So now I've gone in with my e.l.f. Putty Primer, really kind of like applying this. I mean, she's got amazing skin, mashallah, anyway. But I did go on with quite a lot of product here and really blended it out. So यहाँ पे मैंने e.l.f. का पटी प्राइमर इस्तेमाल किया। इसकी स्किन बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इवननेस देने के लिए मैंने इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पे मेकअप फॉरएवर का ही एसेंशियल पैलेट्स यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन का पैलेट है एंड जो दो डार्क कलर्स हैं उनको थोड़ा सा मिक्स करके ना तो इसके जहाँ पे मुझे लगता है कलर करेक्टिंग चाहिए वहाँ पे लगा रही हूँ। सो आइज़ के नीचे थोड़ा सा माउथ एरिया के राउंड एज वेल, और प्रोडक्ट को साथ साथ थोड़ा सा ब्लेंड किए जा रही हूँ। So I'm just using my Makeup Forever Essentials palette again, and I've gone in with a slightly darker colour just to colour correct, and then I've gone in with the Kat Von D foundation. So I love this foundation. It is very, very heavy coverage, and I wouldn't say it's suitable for people with really dry skin. Even after hydrating a lot, you need to be quite careful if you have got dry skin. But it was amazing on my model. सो ये मैंने कैट वन डी की फाउंडेशन इस्तेमाल की है। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी कवरेज है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप ना यूज़ करें। इवन हाइड्रेशन वगैरह सब करते हुए भी मैं इसको मतलब बहुत ही ड्राई स्किन पे ना यूज़ करूँ। ये एक ही फाउंडेशन यूज़ किया एंड ये बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज है। ब्रश के साथ अप्लाई कर दिया एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी। So I've applied it with my brush, and then I've gone in with my beauty blender and I keep tapping away until this is all blended out really, really nicely. You don't want too much product on there. A lot of it obviously I'm wiping off as well when I'm down on the neck and things like that, and any extra product on the back of my hand as well. So yeah, just make sure I tap away until I'm really happy with the blend. My model was really, really fair as well. I don't know if you can tell in the video or not, but she was really fair. So I went in with quite a light colour, and then I had to go a little bit lighter with my concealers and things like that as well. So I'm using the P. Louise white base here because I just wanted to brighten up on the inner corners a little bit more than the shade of concealer I actually had. And you've seen me do this in quite a few videos now as well. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइटनेस ऐड करना था। मुझे आजकल वाइट बेस पसंद आ रहा है, सो पी लुइस का वाइट बेस यूज़ किया है। इनर कॉर्नर्स पे ज़्यादा किया एंड सेंटर ऑफ द फेस में, देन साइडों पे थोड़ा सा मैचिंग कंसीलर तकरीबन लगा रही हूँ। देन इन दोनों को जब ब्लेंड करूँगी ना तो उसकी फिनिश अच्छी आ जाती है। अगर आपको वाइट कंसीलर मिलता है तो आप वाइट कंसीलर बेशक इस्तेमाल कर लें। So contouring again, I'm using my Makeup Forever Essentials palette. I love the fact that I can use this palette for so many different things. It is a really, really good palette, and I know a lot of you have actually bought this and tagged me on Instagram and showed me as well. So sorry I'm making you spend money. So I'm placing this on and I'm contouring quite softly. I don't want a really heavy, harsh contour. So इसी सेम पैलेट से मैंने कॉन्टोरिंग किया एंड थोड़ा सा लाइट शेड यूज़ किया था, बहुत ही डार्क वाला नहीं, क्योंकि मॉडल भी काफ़ी फेयर थी। सो आई डिडंट वांट कि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाए। एंड हल्के हाथ से मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए ना इसको ऐड कर रही हूँ। दैन यहाँ पे बेनिफिट का प्रोफेशनल जो सेटिंग स्प्रे है वो इस्तेमाल किया एंड देन इसकी ब्लेंडिंग कर दूँगी।
So I've just sprayed with the Benefit Professional spray, which I'm absolutely loving. I love the fact that it's got like that fine mist that comes out, and then I'm using my Real Techniques brush and blending out all the highlighted areas. So I'm starting off from the inner corners, blending out any extra product I'm rubbing off on the back of my hand, and then I'm just tapping away until I'm happy with this blend. तो यहाँ पे मैं ब्रश से इसको ब्लेंड की जा रही हूँ एंड आहिस्ता आहिस्ता इसको टैपिंग मोशन से करके एंड ब्लेंड कर रही हूँ. So down the nose, I'm just doing a slight contour as well, not too much. As you guys know, I'm not really a fan of big contouring on the nose, so I do this quite lightly and blend away quite a bit as well. So सारा कुछ जब ब्लेंडेड हो गया, फिर मैं थोड़ा सा क्रीम ब्लशर इस्तेमाल कर रही हूँ उसी पैलेट से ही. आज का ब्लशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कि हैवी होना चाहिए, जिसकी मैं इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभार वीडियोस में कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ब्लेंड कर देती हूँ एंड पे. So these days blushes is really kind of like a big thing here. So I've added on a cream blusher from the same palette, the Makeup Forever, and now I'm going in with Huda Beauty on a powder puff and I'm adding this on. तो यहाँ पे मैंने हडा ब्यूटी का बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, पाउंड केक शेड है एंड इसको पाउडर पफ से मैंने लगाया है. ओबियसली अगर आपकी ड्राई स्किन है फिर शायद आप इस बिट को अवॉइड भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसे है या किस मॉडल के ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं. फिर यहाँ पे थोड़े से हल्के हाथों से मैक का स्टूडियो फिक्स है, वहाँ पे थोड़ी सी इसको कलर दे रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्टोर दे रही हूँ एक्स्ट्रा. So I'm just contouring, just powder contour now with my MAC Studio Fix, and I'm just adding a little bit more dimension just while my powder's on there, and it's going to give me some extra coverage. And then I'm just using my Charlotte Tilbury Flawless powder in the colour Fair, and I'm tapping this in with the other powder that's already there. So I've not swept it away, I've tapped it all in. So यहाँ पे मैंने Charlotte Tilbury का फिनिशिंग पाउडर इस्तेमाल किया है शेड फेयर में, एंड यहाँ पे जो पाउडर है इसको मैंने प्रेस करके इसको ब्लेंड किया है, स्वाइप करके नहीं. So again, just these areas as well, I'm just doing the same technique. Using two types of powders makes such a big difference. You need to try it if you haven't done it already. So now I'm going underneath the eyes, just smoking out a little bit, just with the very first color we used on the eyes. So यहाँ पे थोड़ा सा इधर स्मोक आउट कर रही हूँ जो पहला कलर इस्तेमाल किया था आईज पे. तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लिप बस चाहिए था कि वहाँ पे फिनिश कनेक्ट हो जाए आई मेकअप वगैरह. Just wanted to say a big thank you as well for all the brilliant comments and the support I'm getting on my videos, especially recently. So I really, really appreciate it. Do continue. Your likes, your comments make a really big difference to how my videos do on YouTube as well. So I really, really appreciate it. Thank you. So you can see any fallout I've got there, I'm just using the same brush. There's no actual powder there now, so I'm still just fluffing it away as soon as it happens, and it does normally get rid of the product. And if there's a little bit left, you can go in with a smaller powder, brush, a fluffy one with a little bit of powder, and just sweep it away, and it normally cleans it up for you. So यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर ऐड किया as well, थोड़ी सी डेफिनेशन दे रही हूँ. अभी इतना पाउडरिंग किया है वगैरह, तो यहाँ पे मैक का फिक्स प्लस इस्तेमाल कर रही हूँ. So I've just used the MAC Fix Plus here because obviously we've powdered tons here, so I just want to bring some hydration back into the skin. Going in with my Pat McGrath highlighter. आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. मेरी कुछ ज़्यादा ऑब्वियसली वीडियोस जो अभी लगाई हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे. आपके लाइक्स, आपके स्पेशली कमेंट्स जो होते हैं, तो उससे ना मेरी वीडियोस भी ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी चलती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है. सो थैंक यू सो मच.
यहाँ पे मैंने ये नई लिपस्टिक यूज़ की थी, मैंने कहा लिक्विड लिपस्टिक नहीं यूज़ की थी, ये वाली करती हूँ, लेकिन इसकी फिनिशिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब मुझे लिक्विड लिपस्टिक पसंद आ रही है, तो फिर मैंने चेंज कर दिया था, फिर स्टेला की जो लिपस्टिक्स है वो इस्तेमाल किए थे, तो इसको ठीक कर दिया था. So I went in with this new lipstick from Pat McGrath, which was really, really nice actually. But I'm just so used to using liquid lipsticks. The finish for me was just not what I wanted. So then I went over it with the liquid lipsticks from Stella in the shade Nasty Girl. And here I'm just going over, making sure, lining the lips, just making sure, you know, the eyes have got enough. The black I always go over, so I've just gone in with a bit of powder, pencil, and making sure everything is finished off. So ये pretty much हमारा final look था. I hope आपको पसंद आया. I hope आपको video पसंद आई है. I hope you guys have enjoyed the video and it's been helpful. And I'm going to leave you to watch the final look. And then inshallah, please do leave me a comment, do like and subscribe to my channel. I've got plenty more coming for you guys in the future. Thank you so much. Take care. Look after yourselves. Bye bye.